Welcome everyone. Today I will be taking human nervous system. We have already done the structure of neuron. We have already started control and coordination. That is human nervous system. We have done the structure of neuron in the previous video. आज मैं लूँगी nervous system. There are three types of nervous system. That is central nervous system. That is CNS. It contains brain and spinal cord. Peripheral nervous system, that is PNS, consists of cranial nerves and spinal nerves, and autonomic nervous system consists of sympathetic and parasympathetic nerves. Now, central nervous system, brain and spinal cord, I will take it separately. Brain and spinal cord, the structure of brain and the structure of spinal cord. Peripheral nervous system, cranial nerves, there are 12 pairs of cranial nerves. There are cranial nerves, there are 12 pairs of cranial nerves arise from brain. ये सारे के सारे 12 pairs brain से होते हैं, brain के अंदर होते हैं, मतलब पूरा ये वाला जो part है इसके अंदर सारे cranial nerves होते हैं. Next, spinal nerves. There are 31 pairs and it arises from spinal cord. Spinal cord, जैसे ये vertebral column है, इसके अंदर spinal cord है और यहाँ से arise होता है एक एक pair. So 31 pairs of spinal nerves are present in our body and 12 pairs of cranial nerves are present. So 12 pairs of cranial nerves जो होते हैं ये brain में होते हैं और 31 pairs of spinal nerves ये spinal cord से arise होते हैं और दोनों carry करते हैं क्या? Sensory neuron and the motor neuron. Sensory neuron means carries impulses from sense organs to brain. मतलब जैसे optic nerve हुआ या ऑडिटरी नर्व हुआ, ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन ईयर्स से कहाँ जाएगा? ब्रेन में. आईज से कहाँ जाएगा? ब्रेन में. सो दीज आर ऑल cranial nerves. Spinal nerves, this also contains sensory neuron and motor neuron. Sensory neuron, it carries impulses from sense organs to brain or the spinal cord, and motor neuron which carries impulses from brain to the target organs. So 12 pairs of cranial nerves arise from the brain and 31 pairs of spinal nerves arise from spinal cord. Autonomic nervous system, that is sympathetic and parasympathetic. Sympathetic nervous system क्या function होगा? Accelerates heartbeat. Heartbeat को accelerate करेगा. Constriction of blood vessels, dilation of pupil, dilation of bronchi and bronchioles. एक बढ़ाएगा, दूसरा कम करेगा. Sympathetic nervous system के अंदर it prepares the body for action. एकदम से हम गुस्सा हो जाते हैं, वो sympathetic nervous system है. और sympathetic nerves के थ्रू होता है, एकदम गुस्सा हो जाना. फिर उसके बाद धीरे धीरे जब गुस्सा कम हो जाता है, that is parasympathetic nervous system. Okay, so sympathetic and parasympathetic. Sympathetic prepares the body for action, जैसे dilation of pupil हो गया, dilation of bronchi bronchioles हो गया, constriction of blood vessels हो गया. एक constrict करेगा, एक dilate करेगा. Constrict कौन करा? Sympathetic. Dilate किसने किया? Parasympathetic. उसी तरीके से बॉडी जब एकदम से एग्रेसिव हो जाता है तो सिंपैथेटिक, और जब डाउन हो जाता है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक. तो हमने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि cranial nerves एंड स्पाइनल nerves है. cranial nerves 12 pairs होते हैं जो कि ब्रेन से अराइज होते हैं, एंड स्पाइनल nerves 31 pairs होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करते हैं. सो 31 pairs जैसे मैंने बताया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दोनों ओर से दोनों साइड से spinal nerves निकलते हैं. Now this cranial nerves and spinal nerves both carry sensory neuron and motor neuron. We have done sensory neuron means which carries impulses from the sense organs to the brain. सेंस ऑर्गन मतलब सेंस ऑर्गन जितने भी हैं, स्किन है, आई है, ईयर है, यहाँ से जो ब्रेन में लेके जाता है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं. मतलब सपोज दिस इज ब्रेन, यहाँ से
जो लेके जाएगा, और ये आई हुआ, सपोज दिस इज आई, यहां से जो इम्पल्स कैरी करेगा ये हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, और यहां से फिर कहा जाएगा मसल्स के अंदर, तो ये हो जाएगा मोटर न्यूरॉन। ये मसल्स है और ये हो जाएगा मोटर न्यूरॉन। सो बोथ दिस सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन will be carried by the these are present in the cranial nerves and the spinal nerves. So cranial nerves and spinal nerves carry motor neuron and sensory neuron. Sensory neuron carries the impulses from the sense organs to the brain, and motor neuron carries the impulses from nerve impulses from the brain to the muscles or to the target organs. Clear? And mixed neuron means which carries both sensory and motor. This is known as spinal nerve. So we will do brain and spinal cord separately. Now I'll take central nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord. First I'll take brain. The brain, as we know that brain is a very important part of our body, है ना? It is very important. Brain नहीं होगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। ब्रेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। नाउ द ब्रेन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। वन इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। दीज आर द 3 रीजन्स ऑफ अ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन and hind brain. First of all, the brain, where it is present? It is present inside the skull. That skull, it is also known as cranium. So brain is present inside the skull. Skull जो है ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है। ये एक हार्ड बोनी, ये कितना हार्ड है, ये हार्ड क्या है, ये स्कल है, इसको क्या कहते हैं, क्रेनियम। इट्स अ बोनी बॉक्स, ठीक है। So brain is situated inside the skull, that is known as cranium, that is also known as cranium. Now the brain, it is covered by 3 membranes, that is dura mater, arachnoid and pia mater. These 3 together is known as meninges. Dura mater is the outer layer, arachnoid is the middle layer and pia mater is the inner layer. Now dura mater, it is the outer layer, means it protects. It protects. Next is arachnoid. This arachnoid, it consists of blood vessels. It contains what? It contains blood vessels. Pia mater, again it protects the brain. It helps in protection or it covers the brain. Now you can see here, there is a gap, there is a space between these 3 membranes. The space, it is filled with the fluid which is known as cerebrospinal fluid, and this cerebrospinal fluid, it protects the brain from shocks or injuries. Okay. So this is forebrain, this is the meninges part. All 3 together is known as meninges. Now the forebrain, midbrain and hindbrain. This forebrain, it consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum, you can see here, this is the largest part. This whole part is known as cerebrum. This cerebrum, it is the largest part of the brain. And what is the function? Consciousness, willpower, all the voluntary actions. All the voluntary actions are done by the cerebrum. Cerebrum का function कॉन्शियसनेस हो जाएगा, विल पावर हो जाएगा, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस जो हैं, ये सारा का सारा कहाँ होगा? सेरिब्रम के अंदर। कौन करेगा? सेरिब्रम। नेक्स्ट कम टू द थैलेमस. अगेन इट एक्ट्स एज रिले सेंटर. मिड ब्रेन, इट हैज नो डिविजन, इट इज नॉट डिवाइडेड. नेक्स्ट hind brain. Hind brain consists of pons, cerebellum and medulla oblongata. Now pons is this part is pons, cerebellum is this cerebellum. Again it is also known as small brain or cerebellum. What is the function? It coordinates the muscles. It helps in muscular coordination. ठीक है, जैसे जो लोग अल्कोहल लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा क्लम्सली, मतलब इधर उधर लड़खड़ाते हुए चलते हैं, है ना,
क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल वो लेते हैं वो जाके कहाँ इफेक्ट करता है? सेरिबेलम में। और सेरिबेलम क्या करता है? ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, मसल्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। जब मसल्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो हम इधर उधर चलेंगे, है ना। सो cerebellum, it helps in muscular coordination or you can say balancing the body. जब अल्कोहल लेते हैं तो बॉडी का बैलेंस नहीं रह पाता है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो जाके इस सेरिबेलम पार्ट को इफेक्ट करता है, जिससे कि ये मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज medulla oblongata. This medulla oblongata, it does all involuntary actions. अब बच्चों कई बार लिख देते हैं आप सिर्फ involuntary actions, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीटिंग, फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, फॉर एग्जाम्पल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ स्पाइनल कॉर्ड विल डू सेपरेटली। नाउ सेरिब्रम, one important thing before I forget, gray matter and white matter. Gray matter in brain, it is present in outer part. So gray matter brain के अंदर, gray matter brain के अंदर कहाँ होता है? outer side, outer side. So gray matter क्या consist करता है? cell bodies of a neuron. Gray matter क्या होता है? सेल बॉडीज ऑफ ए न्यूरॉन। हम पढ़ेंगे जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। तो सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन व्हिच इज it is present in the gray matter, and this gray matter is present outside, and white matter is present inside. ये तो हो गया ब्रेन के अंदर, ये किसके अंदर होगा? ब्रेन के अंदर। क्लियर? सो ब्रेन, that is outer part, consists of gray matter. Gray matter means cell bodies of a neuron, and white matter is present inside. White matter is present inside, consists of axon of a neuron. Now brain, again, if you see the rough diagram, this diagram, if you see, if I make rough diagram, this is cerebellum, this is cerebrum, this is the rough diagram, this is medulla oblongata. Cerebrum, you can see the largest part, सबसे बड़ा part होता है। Cerebellum is it is also known as a small brain, and then the medulla oblongata. Now this brain, this cerebrum, it is divided into two, right hemisphere and the left hemisphere. Right hemisphere and left hemisphere. This is right hemisphere and this is left hemisphere. Left hemisphere and right hemisphere. This both hemisphere, these are attached by corpus callosum. Here I have drawn corpus callosum. This corpus callosum, these are the fibers by which the right and the left hemisphere, they are joined together. ठीक है, यहाँ पे ये राइट वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन, दोनों आपस में से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहेंगे? इस फाइबर से। इस फाइबर को क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम. So right hemisphere and the left hemisphere, they are joined to each other with the help of fibers known as corpus callosum. Clear? So this is all about the structure of brain. Once again I am repeating, brain, it is a very important part of our body and it is present inside the skull. Skull के अंदर present रहता है, skull को cranium भी कहते हैं, which protects the brain. It consists of three main layers, dura mater, arachnoid and pia mater. These three together is known as meninges. Dura mater is the outer layer, arachnoid is the middle and the pia mater is the inner layer. Now arachnoid, it contains what? Blood vessels. Pia mater, it covers the brain. Next, the space between these three, it is filled with the fluid which is known as cerebrospinal fluid, which protects the
brain from mechanical shocks or injuries. Next come to the cerebellum, next come to the cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Cerebrum, it is the largest part of the brain and it helps in consciousness, willpower, memory, intelligence, all the voluntary actions. What do you mean by voluntary actions? Voluntary action का मतलब होता है which is under our control. ठीक है, हम चाहेंगे तो यहाँ से वहां मूव करेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं मूव करेंगे. सो cerebrum, voluntary actions. Next come to the medulla oblongata. Medulla oblongata, it does all the involuntary actions which are not under our control, like breathing, heartbeat, in peristaltic movement of the alimentary canal. ये सारी चीजें जो है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेरिबेलम, जैसे मैंने बताया है, इट हेल्प्स इन द मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस. जब हम मूव करते हैं तो मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है और हम मूव करते चले जाते हैं. ठीक है. सो and this brain, it is again divided into 3 regions: forebrain, midbrain and hindbrain. forebrain सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है. मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं होता है और हाइंड ब्रेन के अंदर पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है. सेरिब्रम ये राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है और ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं. ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं किसके थ्रू? कॉर्पस कैलोसम के थ्रू. ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. अब हम करेंगे द लोब्स. What are the 4 lobes present in the brain? अब सेरिब्रम पार्ट के अंदर 4 लोब्स होते हैं. फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और हो जाएगा टेम्पोरल लोब. There are 4 lobes in the cerebrum region, not cerebellum. सेरिब्रम के अंदर 4 लोब्स होते हैं. फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब. फ्रंटल लोब के अंदर क्या क्या चीजें होती है? मूवमेंट, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी. टेम्पोरल लोब के अंदर स्पीच, बिहेवियर, हियरिंग, विजन, इमोशन, मेमोरी भी होगा. ठीक है. पैराइटल लोब के अंदर इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लैंग्वेज, सेंसेशन, रीडिंग, टेलिंग राइट टू लेफ्ट एंड ऑसिपिटल लोब सिर्फ विजन में होगा. सो ये 1, 2, 3, 4 एरिया होते हैं. इन चारों एरिया के अंदर अलग अलग चीजें होती है. इसके अंदर ये फ्रंटल लोब के अंदर मूवमेंट, रीजनिंग ये होगा. टेम्पोरल लोब के अंदर स्पीच, बिहेवियर, हियरिंग, विजन ये एरिया होगा. पैराइटल लोब के अंदर इंटेलिजेंस, रीजनिंग यहां से होगा. ऑसिपिटल लोब छोटा होता है जिसके अंदर सिर्फ विजन होगा. जो हम देखते हैं वो कहां पे चला जाएगा? ऑसिपिटल लोब के अंदर. बाकी रेस्ट ये सेरिबेलम है. ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया ब्रेन का. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड.